The next important question in the RNA splicing is that how the correct splice site is identified and found by the spliceosome or by the introns. We have already seen one mechanism that guards against inappropriate splicing. The active site of the spliceosome is only formed on RNA sequences that pass the test of being recognized by multiple elements. So different elements इस साइट को पहले रिकॉग्नाइज करते हैं और फिर ही स्प्लाइसियोसोम जो है वो इस पे आता है और अपनी कैटालिटिक एक्शन करता है. Thus, for example, the 5' splice site must be recognized initially by the U1 SNP and then by the U6 SNP. It is unlikely that both would recognize an incorrect sequence. So, ये तो नहीं हो सकता कि दो SNPs ने सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करना है और दोनों ही गलत सीक्वेंस को आइडेंटिफाई कर लें. Splice site recognition is prone to two kinds of errors. However, इस गाइडिंग मैकेनिज्म के बावजूद जो है एरर के चांसेस तो रहते हैं. तो दो मेन किस्म के एरर्स जो हैं वो स्प्लाइस साइट रिकॉग्निशन में हो सकते हैं. फर्स्ट, स्प्लाइस साइट्स कैन बी स्किप्ड with components bound at a given 5' splice site pairing with those at a 3' site beyond the correct ones. So अगर जो है वो एक एक्सॉन, इंट्रॉन, एक्सॉन, इंट्रॉन, एक्सॉन, तो ये जो पहला एक्सॉन है ये गलती से दूसरे एक्सॉन को मिस करते हुए तीसरे एक्सॉन के साथ बाइंड कर जाए तो इस किस्म की गलती को हम कहते हैं एक्सॉन स्किपिंग हो गई है. सेकंड, अदर साइट्स क्लोज इन सीक्वेंस बट नॉट लेजिटिमेट स्प्लाइस साइट्स could be mistakenly recognized because the splice site consensus sequence are rather loose. So splice site में जो है कहीं पे भी कुछ जो है मिसरीड हो सकते हैं सीक्वेंस जो कि एक्चुअल स्प्लाइस साइट का सीक्वेंस नहीं है बल्कि उससे हट के किसी जगह का सीक्वेंस है. Therefore, for example, components at a given 5' splice site might pair with components bound incorrectly at such a pseudo 3 splice site. इसमें आप देख सकते हैं कि ये एक्सॉन 1 है और एक्सॉन 2 है और एक्सॉन जो है वो 3 है. तो ये तीन एक्सॉन्स हैं और गलती से ये एक्सॉन 1 जो है ये एक्सॉन 3 के साथ बाइंड कर जाता है और एक्सॉन 2 जो है ये स्किप हो जाता है. तो इस तरह से एक्सॉन 1 और एक्सॉन 3 जो हैं ये ज्वाइन कर गए. सो इसको हम कहते हैं एक्सॉन स्किपिंग. दूसरी किस्म का जो एरर है वो ये है कि एक्सॉन 2 के अंदर एंड पे एक सीक्वेंस है और ये सीक्वेंस जो है ये गलती से एक्सॉन 1 का जो फ्री एंड है वो इस सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करने के बजाय इस सीक्वेंस को आइडेंटिफाई कर लेता है. तो फिर एक्सॉन 1 के साथ ये जो एक्सॉन 2 का छोटा सा पीस एंड का रह गया ये ज्वाइन कर जाता है. सो ये जो है दिस इज सूडो सीक्वेंस और इस तरह से ये जो है ये एरर भी हो सकता है. 2 ways in which the accuracy of splice site selection can be enhanced are as follows. First, while transcribing a gene to produce the RNA polymerase II carries with it various proteins with roles in RNA processing. These include proteins involved in splicing. So, जब RNA ट्रांसक्राइब हो रहा होता है तो RNA पोलीमरेज के साथ कुछ प्रोटीन्स होती हैं और इन प्रोटीन्स का रोल अभी आगे जाके RNA स्प्लाइसिंग में आना है. तो ये प्रोटीन्स ऑलरेडी उस RNA पोलीमरेज के साथ मौजूद होती हैं.
When a 5' splice site is encountered in the newly synthesized RNA, the factors that recognize that site are transferred from the polymerase carboxy terminal tail onto the RNA. तो जब ये सीक्वेंस ट्रांसक्राइब हो जाता है तो ये प्रोटीन्स या ये फैक्टर जो कि आरएनए पॉलीमरेज के पास होते हैं ये ट्रांसफर कर दिए जाते हैं आरएनए के ऊपर और उस सीक्वेंस पे उस जगह पे जहां से के स्प्लाइसिंग सीक्वेंस पाए जाते हैं. Once in place, the 5' splice site components are poised to interact with those other factors that bind to the next 3' splice site to be synthesized. Thus, the correct 3' splice site can be recognized before any competing sites further downstream have been transcribed. This co-transcriptional loading process greatly diminishes the likelihood of exon skipping. A second mechanism guards against the use of incorrect sites by ensuring that splice sites close to exons are recognized preferentially. So-called SR proteins, that is serine arginine rich proteins, bind to the sequences called exonic splicing enhancers ESEs within the exons. SR proteins bound to these sites interact with the components of the splicing machinery and recruiting them to the nearby splice sites. In this way, the machinery binds more efficiently to those splice sites than to incorrect sites not close to the exons. Specifically, the SR proteins recruit the U2AF proteins to the 3' splice site and U1 synapse to the 5' splice site. These factors demarcate the splice sites for the rest of the machinery to assemble correctly. SR proteins are essential for splicing. They not only ensure the accuracy and efficiency of constitutive splicing but also regulate alternative splicing. This alternative splicing we will see in future.